backward class, minorities and women. Ninth activity, contribution or funds provided to technology incubators located within academic institution which are approved by the central government. 10th and last activity, rural development projects. इसका एक कंपाइलेशन बना दिया है हमने सारे स्टैट्यूटरीज, वो मैंने आई हैव शेयर्ड इट विद प्रोफेसर सौरभ मित्तल. मे बी टुमारो we'll circulate it and will be made available to you, and if in case it is not available, it is easily available on all the websites. You don't have to run around for that. नहीं तो यहां से भी आपको मिल जाएगा. So what is CSR का फर्स्ट पार्ट कवर हो गया. सेकेंड पार्ट डेफिनेशन में है. Then we again come to rule 2C. Projects or programs relating to activities undertaken by the board of directors of a company in pursuance of the recommendations of the CSR committee of the board as per declared CSR policy of the company, subject to the condition that such policy will cover subject enumerated in schedule 7 of the act. तो schedule 7 में जो आपको मैंने लिस्ट बनाई है, that is not an exhaustive list. A company can do other things than what is written in schedule 7. So as a CSR professional, if you think कि नहीं मेरे एरिया के लिए, मेरी कंपनी के लिए, मेरे नेशन के लिए समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट, माइक्रो फाइनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन दैट लिस्ट, you are eligible, you are allowed to do that. Go ahead. That is not exhaustive list. Your CSR policy will may contain things which are beyond that schedule 7. So this is the exact definition of CSR, which will be applied, which will be useful, which we have to continuously, apply in all our endeavors and undertaking henceforth as a CSR professional. See, good for us कि at least we are clear where we want to reach. We also know कि what is our, CSR activities which we have to do. What is the institutional mechanism to deliver those activities? What is the, what institution will make programs, policies, structure, how the company will, deliver those corporate social responsibilities activities. So rightfully Companies Act has done one thing. Amongst the board of directors, it has carved out a committee which is called CSR committee, Corporate Social Responsibility Committee. CSR कमेटी, लेकिन CSR कमेटी हर कंपनी में नहीं बननी है. 3 elements, if any of the 3 elements are satisfied, a CSR committee is compulsory. First element is net worth 500 CR plus. अगर किसी भी कंपनी का किसी भी टाइम एनी वर्ड यूज करा है, एनी फाइनेंशियल ईयर, अभी मैं उसको कन्फाइन करूंगा, एनी फाइनेंशियल ईयर का मतलब 10 साल 20 साल, कभी भी पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 500 CR से प्लस टर्नओवर है, CSR कमेटी बनाना कंपलसरी है. I will come to that point. I know what are you have 3 years of issue na. I will come to that point. Second element, turnover 1000 CR से अगर ज्यादा है, एनी, कभी भी आपको CSR कमेटी बनानी. थर्ड एलिमेंट, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, कभी भी आपको CSR कमेटी बनानी है. So to establish a CSR committee, any of the 3 elements should be satisfied. Act says any of the years, कभी भी, लेकिन रूल्स में लिखा है कि 3 साल से अगर ज्यादा है तो फिर आपको नहीं करनी है. तो लेट अस फॉलो द रूल्स, हमारे लिए कन्वीनियंट है, कंफ्यूजन भी कम रहेगा. पर एक्ट इज क्लियर, एनी वर्ड, कभी भी अगर 10 साल 20 साल 30 साल जब से कंपनी है बनी है, अगर कभी भी ये 3 एलिमेंट हैं तो आपको CSR कमेटी बनानी है, हमें बनानी है CSR कमेटी. तो रूल्स कहते हैं कि 3 साल का एवरेज हम ले रहे हैं, तो 3 साल के पहले अगर कुछ भी हुआ होगा, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. अगर 3 साल में लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर आपका ये 3 एलिमेंट्स में कोई भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो देन यू मेक अ CSR कमेटी. ठीक है. नेक्स्ट, who will be the members of that CSR committee?
first three plus directors will be members of that committee, and one director should be an independent director. In case of a private company where only there are two directors, so both of them will be member of CSR committee. In case of unlisted company, private company, not required to appoint an independent director. Without an independent director, there will be a CSR committee with 3 plus directors. Fourthly, in case it is a foreign company, any person who is preferably a resident of India and who is eligible to receive notices on behalf of the foreign company will be one member of CSR committee, plus one member will be nominated by the foreign company. So there will be two members of CSR committee. He may or may not be director. So firstly, we have identified कि CSR क्या है, why CSR is required. Secondly, we have identified कि CSR की definition क्या है, हमें क्या करना है. Thirdly, we have created an institution for delivering those activities, works. Next, अब वो institution का, what is the job of that institution? CSR committee, what is? Maybe I think you all must be knowing that, but only for the benefit, because I have been specially invited to tell you about the Companies Act. So let me repeat it so that anyone who does not know it, he or she will benefit out of it. There are 3 jobs of CSR committee, and they are recommendatory in nature, not decisive in nature. First job is formulation and recommendation, to formulate and recommend CSR policy. इसमें भी ये लिखा है shall indicate, जो 7th शेड्यूल में जो हमने जो 10 चीजें पढ़ी हैं वो उसमें इंक्लूड करेगा, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. First job, formulate and recommend CSR policy. Second job, recommend amount of expenditure on all those programs. Third job, monitor CSR policy from time to time. So all 3 are recommendatory in nature. Now we come to responsibility. The board is the supreme power in a company. So what is the responsibility of the board? The board has also 3 responsibilities. First responsibility, approve the CSR policy. Approve का मतलब ये नहीं है कि CSR committee ने बोलते हैं उसको as it is approve करना है. They can modify, they can amend, they can change, they can do anything with the recommendations of the CSR committee. Second, place it on website. Make it transparent. एक्ट में लिख दिया कि वेबसाइट में डालना है, आपको सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है. थर्ड, एंश्योर एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन CSR. भाई आपने अप्रूव करी है CSR पॉलिसी, आपने अमेंड करा है, मॉडिफाई करा है. नाउ यू हैव टू एंश्योर दैट दोज पॉलिसीज आर अप्लाइड. तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू एंश्योर दैट दोज पॉलिसीज आर फॉलोड. CSR कमेटी का रोल है रिकमेंडेटरी इन नेचर, implementation board to करना है. It can seek help from the CSR committee. That's it. Next question. How much contribution has to be made to CSR fund? कितना करना है भाई? Can anybody answer? 2% after tax. See, it is not 2%. एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी है कि कम से कम 2% करो. That is minimum. Minimum is 2%. You can spend 5%, 10%, 20%, 50%. Who is stopping you? Why is this 2% being highlighted? भाई दशांश होता है ना. जब हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं, जितने भी हम गरीब हो, 1 एकड़ भी खाना हो, कुछ भी हो, 10वां अंश हम अलग रख देते हैं अपने घर में. वो सिर्फ साधुओं के लिए और बांटने के लिए होता है. इट इज प्रैक्टिस. मे बी हम लोग वी हैव ऑल मूव्ड इनटू दिल्ली, सो वी डोंट रिमेंबर इट. बट इफ यू गो टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड यू सी हाउ दे, जब वो कटाई होती है, बुआई होती है, जब अनाज आता है, धान आता है, 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ दैट पोर्शन इज सेपरेटेड
It is kept in separate room chambers, and that 1/10 of the portion is for distribution as alimony or distribution as a social activity. This 1% and 2% is far less. So as a CSR profession, let us encourage our organization कि भाई ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आप कर दो, लेकिन आप उसमें क्यों स्टिक क्यों कर रहे हो? अगर कोई प्रोजेक्ट, लेट अस अज्यूम 2 लाख किसी को कंट्रीब्यूट करना है, वो प्रोजेक्ट 2.5 लाख का हो रहा है, तो नहीं, डोंट वरी, इट्स गुड फॉर यू, गो अहेड. ठीक है, दैट इज क्लियर. सो मिनिमम थ्रेशोल्ड इज एटलीस्ट, कम से कम 2% तो कर दो भाई, 2 रुपए तो दे दो 100 में से, कर दो. एंड दो जो कैलकुलेशन करना है वो एवरेज नेट प्रॉफिट्स लास्ट 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, उसका एवरेज लेके जो भी अमाउंट आता है वो कैलकुलेट करके वो 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पॉलिसी आप लोग बनवाएं या एडवाइस करें, बोला सर हम 2% पे क्यों अटके हुए हैं, रिलायंस जब 5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो हम कम से कम लेट अस कॉन्ट्रीब्यूट 4%. यू इनफैक्ट जो सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उनके फिगर्स लेके अपने बॉस के पास चले जाइए कि सर इसने तो 10%, इसने तो 14%, सी इट इज सच अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नाउ. वी हैव टू, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग. जब मैंने फर्स्ट पैरा बताया, जब आप फर्स्ट डिस्कशन किया, तो दैट इज व्हाई आई गेव ऑल द फिगर्स टू यू. We have the responsibility, if we motivate these board members sitting there and tell them that gravity of the situation is being faced by our brothers, they will be motivated to invest more in these funds. Let us encourage them to, let us give them more projects, let us encourage them, and we will contribute to the development of nation also. अब next question है, where to spend? These funds have to be spent. Whether it has to be spent across the world, across Asia, across Indian subcontinent, across India, और स्पेसिफिक स्टेट, सिर्फ हरियाणा में करना है, या कंपनी जहां पे सोनीपत में ही कंपनी स्टैब्लिश हो, सोनीपत में करना है, या कंपनी जो जहां पे है उसके सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में करना है. Where should that fund be spent? The act says, the language of act is like that, shall give preference to the local area and areas around it where it operates. So if it is an insurance company, it is operating across India. So across India आप कर सकते हो. लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड कर रही है, तब क्या करना है? It can do it. Not allowed. The act has, the rules have prohibited इंडिया की बाउंड्री के बाहर कोई भी CSR फंडिंग नहीं होगी. Whether it is a foreign company, whether it is an Indian company, whether it is a private limited company, whether it is any kind of company. So अगर नेपाल में earthquake भी आता है, आप नहीं कर सकते spend. This is not mandated. एक चीज है. दूसरा, shall give preference to the local area and areas around it where it operates. So preference का मतलब ये है interpretation. It is subject to the interpretation of Supreme Court because it will go. पता चला कि राउरकेला में फैक्ट्री है और सारा जो पैसा है CSR का वो बनारस में खर्च हो रहा है. Not allowed. Preference to राउरकेला. Preference का मतलब 51% जो अमाउंट है वो राउरकेला में ही स्पेंड करो, बाकी आप पूरे इंडिया में जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वहां पे स्पेंड करो. सो जो कैश है उसमें ये है कि कम से कम 50 से ऊपर का बैलेंस लोकल एरिया में करो, बाकी यू टेक CSR कमिटी कैन टेक अ कॉल कि कैसे कर रहे हैं. बट दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. नॉन कंप्लायंस में क्या करना है? मना कर दे कोई कि नहीं, आई डोंट वांट टू स्पेंड. ठीक है, 2% इज मैंडेटरी, गुड, 2% इज मैंडेटरी. एक बैंक अकाउंट अलग बना के मैंने 2% डाल दिया है और हर साल उसमें डालता रहूंगा मैं, और हर साल अपने बोर्ड में लिख दूंगा कि 2% इतना आया था. आई हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम माय प्रॉफिट्स एंड माय कंपनीज अर्निंग,
and every year I invest 2% add to that kitty, but I will do nothing. उसका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट भी उसी में प्लाव इन करना है, तो बोलता है इंटरेस्ट भी जो है वहीं पे रहेगा. करंट अकाउंट में खोल दिया, इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है उसको. गुड. कोई सजेस्ट कर सकता है क्या रेमेडी है? See, we have to find out remedies. Let us not miss that opportunity. Companies Act does not provide any specific remedy for it. Chartered accountants can do whatever they want to do. They are free. सारा 100% compliance हो गया, check tick हो जाएगा box, compliance complete. But nothing has come to the nation. It is on in the banks. So specifically अभी prima facie and उसमें penalty क्यों नहीं लगाई? It is very surprising. Penalty is also there. हाँ क्या है यार बताओ. 25,000 to 25 lakh rupees. नहीं ये किसके लिए? इसके लिए पेनल्टी है. If you are not disclosing, if you are not reporting this, no. नहीं they are reporting भाई. They are 2%. They are segregating from their account. They have opened separate account. They are reporting कि मैंने एक अकाउंट ऑफिसर बैठा दिया इसी फंड को मैनेज करने के लिए, एक बैंक अकाउंट सेपरेट बना दिया, उसमें मैं आई एम कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग फंड. दे आर ऑल रिपोर्ट्स आर कंप्लीट. रिपोर्ट्स में कोई इशू नहीं है. बट क्या है, हर साल उनको 2% देना है तो हर साल वो 2% निकाल करके दे देते हैं उसमें. वो अकाउंट में रहता है पैसा. दे आर नॉट वर्किंग. दैट मनी इज इन बैंक्स. Any bank. They need to, I mean, if they're not spending directly to the grassroots level, they need to spend that money into the PM relief fund, I think. हाँ दे नहीं वो किसने बोला आपको? No. That is, see, over a period of 1 year, if your budget is let's say 10 crore rupees, and you have spent 8 crore, the rest 2 crore you can give it to Prime Minister. It is not mandatory. Okay, but you can also carry forward that fund. Yes. Or you may not spend that fund. You can explain that this is why I have not spent this money. For It is very generic thing. It is not mandatory that the money which is left out you will give it to Prime Minister. No, it is not that. It is one of the options of out of that 10 points they have mentioned. The Prime Minister Relief Fund is one of the options. You can donate money there. But that government has to explain now why they हाँ they are explaining ना. They are saying कि भाई हमें कोई appropriate schemes नहीं मिली हैं. Disclosure, complete disclosure. Every 10 साल तक वही disclosure चल रहा है. Add होते जा रहा है पैसा. ठीक है. There is no criminal liability for them. ठीक है. Wrong disclosure के लिए तो है. You have rightly pointed out. They are rightly disclosing. उसका रास्ता ये है. अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो writ of mandamus हाई कोर्ट में respective हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाए. Asking the high court to direct them to spend the CSR fund. दूसरा अगर प्राइवेट कंपनी है तो PIL फाइल कर दो आप हाई कोर्ट में. फॉर गवर्नमेंट कंपनीज यू फाइल अ रिट ऑफ मैंडेमस. फॉर प्राइवेट कंपनी यू फाइल अ PIL. उसमें एडवांटेज क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इन अंडर आर्टिकल 141 हैज राइट टू मेक रूल्स वेयर लॉ इज साइलेंट. सो इन दिस केस द लॉ इज साइलेंट. इट इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन. सो अंडर आर्टिकल 141 व्हेन द मैटर अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट, जैसे विशाखा के केस में गाइडलाइंस बनाई थी उन्होंने ना हैरेसमेंट के लिए, जब कोई लॉ नहीं था. अब लॉ बन गया तो लॉ इज एप्लीकेबल, तो वो गाइडलाइंस बना देगा. वंस द गाइडलाइंस आर इन प्लेस, everybody has to spend that. Everybody has to take action. Because if they do not take action, it will amount to perjury. फिर उनके पास सजा है. Then there is automatically penalties there. ठीक है. But this is a prima facie remedy. I am just I am searching कि क्यों नहीं दिया है उसमें. And maybe next time जो amendments होंगे हो सकता है they will improve upon it. ये कई बार कुछ चीजें So far the penalty is if you are not reporting it. हाँ, that's right. That's right. But if you are reporting, but you are doing nothing, then This is again very vague thing to debate on. Abhi- Because if some company is doing something and reporting, and if some company is doing nothing and reporting, I don't know. The credential of the company should be judged in that way. But it might be quite possible that some companies they are just depositing, opening the account, doing nothing, which is quite possible in some of the organizations. There are many ways. Even today, we are talking about this 2% and above. But
till today, if you look at most of the old corporates like Tata, Birla and all that, they are doing CSR since inception. And you Even know the the law was percentage not of there. money they are spending on CSR? It is more than 20%, 30%. I can tell you about Tata, they are spending 62% of their profit. On CSR. Yes. The philanthropic way. It is not CSR. Tata's On welfare. philosophy is that whatever comes from the society should go back many times. So that is how to calculate the cumulative figure. Tata is spending more than 60% of their profit they are generating out. So, but it depends. Even Birla is also, but their percentage is very high, not 2%. This is 2% what the government is saying. It is the law. But there are companies that are doing 20%, 30%. There are companies who are doing nothing. Basically, this law is for those companies who are not operating on the Basically, to say, yeah. those who are already spending. See, ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है. Maybe technical people will help us out. CSR policy के contents क्या होनी चाहिए? What should be the contents of CSR policy? ठीक है. When you have to draft a CSR policy, एक 5-6 चीजें वो आप लिख सकते हो उसमें. What, why, where, how, when. आप ये सब क्वेश्चंस आंसर कर दो, आपकी पूरी CSR पॉलिसी बन जाएगी. ठीक है. कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको. CSR policy should specify that the corpus would include the following: 2% of the average net profit before tax. Secondly, any income arising therefrom. अगर किसी ने इंस्टीट्यूशन ITI खोला है, it is a successful institution, so there will obviously be some profit, so that will be plowed back to that organization. Third, surplus arising out of CSR activities, even the interest, if any, that will be plowed in back to that, but that has to be mentioned in the CSR policy. The rules provide for that. वो what, why, when, where, how, ये तो आपने अपनी पॉलिसीज बना ली कि इस प्रोजेक्ट में इतनी फंडिंग की जरूरत है, इस प्रोजेक्ट में इतनी जरूरत है, इसका इतना व्हाटएवर, जैसा भी. जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो बता रहा हूं. फर्स्ट तो यही है. सेकंड है, following should be mentioned in CSR policy: surplus arising out of the CSR activity will not be part of business profits of the company. Also, any surplus arising out of CSR activity will be redirected towards CSR activity and not the business of the company. Okay. Next, some transparent monitoring mechanism has to be provided. Okay. Checks and balances, क्या every payment should be uploaded on website. और जो internal आप CSR team आप बना रहे हो, that internal CSR team, in every 3 months it can audit what is the progress of the work and go to that spot inspection के लिए some transparent monitoring mechanism कि कितनी ग्रोथ हो रही, कितना डेवलपमेंट हो रही, कितने फंड्स और रिलीज करने नहीं करने. What should be the modalities of execution? Next है list of CSR projects, programs, activities to be undertaken as specified in Schedule 7 of the Act. Next है expenditure budget for CSR activities. So this CSR policy में आप how, what, when, where लिख करके ये सब चीजें सब मेंशन कर सकते हो. एक मेरे ख्याल से CSR की एक टेम्पलेट कोई बना देगा तो मेरे ख्याल से सबके काम आ जाएगी वो CSR पॉलिसी कैसे बनानी है. Classification of CSR expenditure. Excluded activities. ठीक है. Which activities can be CSR में कौन कौन सी activities में मैंने 7 शेड्यूल बना दिया. मैंने ये भी बोल दिया उसके अलावा भी आप कर सकते हो. पर कुछ no go areas हैं which act and rules have specified. एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन नहीं देना है CSR एक्टिविटीज में, कम वोट में. सेकेंडली, अगर एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए CSR एक्टिविटी को नहीं अप्लाई करना है, बिकॉज इफ इट इज फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट इट इज परक्विजिट, बट देन इट कैन बी मिक्स्ड. अगर कोई आपने स्कूल खोला है तो आप एम्प्लॉइज को और बाहर के लोगों को ले सकते हैं साथ में.
So then it will not fall under that exemption clause. But when you specify कि only employees of this company will be children of employees will study in that school, then CSR funds cannot be utilized for the purpose. Thirdly, activities that are in pursuance of normal course of business of the company. For example, if somebody is in a solar business, he makes solar power plant, and यहाँ पे CSR एक्टिविटी भी होती है सोलर पावर प्लांट लगाने की, तो वो ये नहीं कर सकता कि अपने 2% भी सोलर पावर प्लांट लगाने में खर्च कर दे. He has to divert that. It is reasonable at one end also and it is unreasonable in one end also. भाई उसकी एक्सपर्टाइज सोलर पावर प्लांट लगाने में है whatever. तो गांव में अगर इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्लांट लगा दे तो good for the everybody. But then that is not allowed. No, that is allowed. अच्छा ऐसा है? If That is it good. is beyond the business area, suppose I am doing the solar panel, donation to the beneficiaries. It's part of my. नहीं, but our interpretation is that कि आप जो अपने activities there that are in pursuance of normal course of business of the company. Yes, suppose हाँ. fortunately I am from the power business and we are also dealing with solar and the wind. So that power plant we are putting for solar or wind, that is one aspect. If we are putting this 2% profit in that plant, then it is not CSR. If this 2% money we are giving to the community to purchase this solar panel, that is CSR. नहीं तो that will be great ना. That आपकी एक्सपर्टाइज जिसमें है वो अगर हम कहीं यूज कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. पर आपके बिजनेस से ही खरीदना पड़ेगा हमें. Yeah, that's okay. So that will not be good. That is the thing ना. No, that is. Then you are promoting your own business. No. But we are. You should say कि किसी भी से कहीं से भी सोलर पैनल खरीद लो आप. आप अपने बिजनेस को थोड़ी बढ़ावा दे सकते हो ना. नहीं. Share value का इन्वेस्ट concept नहीं कर कैसे है? सकते. हाँ? Shared value का जो concept है हाँ. CSR में, that is the same part. अच्छा. Shared value में क्या आप बिजनेस को एज ए बिजनेस आप देख सकते हो विद द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी. Shared value का जो concept है, ओके. उसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो. नहीं ऑब्वियसली. बेनिफिट कर रहे हो हाँ. देखिए इसमें नहीं business इनकी का- एक्सपर्टाइज किसी चीज में है उसको अलाउ कर देना चाहिए कि भाई दे कैन डू इट इन योर डिफरेंट वेज. Yeah, if it is beyond your business purview, then it is allowed. Then it is allowed. Yes, it Okay. is allowed. Good then. ठीक है. But most of the interpretation, if you will go through the internet and find out on this particular aspect, you will find that anything done in this particular aspect that you are manufacturing some product and you are utilizing that particular product for the benefit of the community, or you are considering as a part of CSR, but as per the law, it is not considered, as sir is saying, it will not be considered as per Yes. in the CSR aspect. Yes. No, In what most I- of the interpretations on internet, you will find in the same way that would not be covered in the pursuance of CSR law. No, that's not fine. If it is part of business agenda, for example, I am putting a solar plant. Okay, I am putting, let's say, 20 crore rupees to put a solar plant. So I am saying that out of this 20 crore, 19 crore is my business money, 1 crore is CSR money. It is not that. Absolutely. Beyond this, Mhm. suppose I have put the solar plant, but now since my business is solar, I am purchasing the solar small unit and distributing among the beneficiaries. That is CSR. नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शुड सेंड अ क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड. तो उसमें ज्यादा इजी सर्कुलर वगैरह इशू कर देना तो ज्यादा आसान हो जाएगा. They are clearly saying that if it is beyond, it should not be part of the year of business agenda. It is not business agenda. I am giving free of cost. ओके So that- एब्सोल्युटली yeah. एब्सोल्युटली. Different from that. ठीक है. एक्टिविटीज इंक्लूडेड Yeah, monetary. approved by the board of directors and on the recommendation of the CSR committee must be cited in the CSR policy. Second is building capacity of CSR team up to 5% of CSR expenditure. It is a good employment opportunity for HR professionals and masters and social work professionals. So कम से कम they will have that professional recognition now. जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज एंड लॉयर्स को एक प्रोफेशनल रिकग्निशन मिलता था, मे बी HR प्रोफेशनल विल हैव ग्रेटर रिकग्निशन एंड MSW स्पेशली they will also have that institutional framework क्योंकि 5% is a huge amount. So even if these companies employ 2 to 3 professionals, so everyone can move forward. ठीक है. So that is also applicable also for your NGO part. Suppose the corporate is implementing program in association with some NGO partner, corporate can spend
5% of that 2% money to build the capacity of that NGO profession. Absolutely. See, if corporate sector wants to make a trust, या society or section 8 company, then also it can invest that 5%. Secondly, अगर कोई NGO partner है, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन खुद भी अपना टीम डेवलप कर सकते हैं, इंटरनल टीम डेवलप कर सकते हैं. Even also that CSR professional salary also part of CSR. Yes, absolutely. No. That salary of the CSR professional is also part of the CSR budget. Yeah, but that should not exceed 5%. No, If that we are is- spending 1 that is crore, it should not be That more is than 5%. that is over and above. That is over and above. That 5% what we are referring is the 2%. 5% of that 2% you can spend to build the capacities of your own CSR and also your partner CSR. That is And the salary the corporate is giving to the CSR professional, that is also part of CSR. And you can also send, people for training. Just ये जिस तरह की training हो रही है ना, that budget will also come from that 5%. So you can tell your management also कि भाई आप आराम से हमें training दिलाओ, कोई issue नहीं है. तो What we have done. ठीक है. Annual reporting of CSR spend. इसमें there are 9 points. Board of directors of the company are required to submit the annual report under section 134(3) of the Act commencing on or after 1st April 2014 including following particulars. जो आप बोल रहे थे ना, वो ये 9 चीजें उनको disclose करनी है. If they do not disclose, then there is a penalty. So first disclosure is composition of CSR committee. Second disclosure is responsibility statement of CSR committee stating that the implementation and monitoring of CSR policy is in compliance with CSR objectives and policy of the company. Third is details of CSR spent during the financial year. इसमें details में लिख देगा zero spent, लेकिन ये declare कर देगा. Fourth is disclosure of reasons for not spending. This is there also. ये है. Average net. Fifth is average net profit of the company for the last 3 financial years. Sixth है brief outline of all company CSR policies. Seventh is overview of projects or programs to be conducted. Eighth is prescribed CSR expenditure 2% of the average net profit of last 3 financial years. Ninth is CSR policy should be displayed on the company's website.